ओके ओके, मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? हाँ सर। ओके, भी गलत जगह पे ये कर दिया। यस सर। ओके, कैमरा ऑन। Okay, let me share the screen. 22, 21. Okay. ये क्या हो रहा है? मैंने क्या शेयर कर दिया? तुम क्या देख रहे हो? तुम्हें स्क्रीन आ रहा है? हाँ सर, स्क्रीन आ रही है आपकी। मतलब वो बोर्ड नहीं आ रहा है? नो सर, वो नहीं आ रहा है। देखता हूँ इसको क्या हो गया। कन्वर्ट मीटिंग रिकॉर्डिंग आ रहा है। कहाँ गया? अरे ये कहाँ गया? और एक गायब ही हो गया। अच्छा ठीक है, अब मैं वापस वेटिंग रूम में कोई है। ओके चीज। ओके, अब आ रहा है ना ये स्क्रीन, ये बोर्ड? जी सर। ओके, व्हाट आई वाज सेइंग दैट मैंने मैपिंग डिफाइन की। मैंने लिया इनकम्प्लीट स्पेस, यानी जो नॉर्मल लीनियर स्पेस है लेकिन कंप्लीट नहीं है। एंड यू हैव टू रिमेंबर, इसमें जो नॉर्म है, norm of x is equal to supremum. Do I have supremum j greater than equal to 1 xj, the sup norm, दोनों पे ही नॉर्म है। और मैंने मैप किया डिफाइन t from x to y such that t of x1 x2 so on and so forth is equal to x1 comma 2x2 comma 3x3, मतलब इस तरह की मैपिंग। ओके, नाउ t is linear। मैं दिखाना चाहता हूँ इसमें क्लोज ग्राफ तो है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है, तो वो हो जाएगा कि जो क्लोज ग्राफ थ्योरम है वो ट्रू नहीं है इफ आई टेक इनकम्प्लीट स्पेसेस एज माय डोमेन और माय कोडोमेन। मैंने कहा था दोनों में फर्क क्या है, तो क्लोज ग्राफ का मतलब इन मैट्रिक्स स्पेस होगा क्लोज ग्राफ। यहाँ पे जरा देखो, इफ xn converges to x in x and yn converges to y in y, then y must be equal to, just a minute, मैं क्या कह रहा हूँ, इससे मैंने गलत लिख दिया, and t of xn converges to some y in x, then y must be equal to tx। तो ये तो अपना क्लोज ग्राफ। हाँ सर। कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है, if xn converges to x, then automatically t of xn converges to t of x। ये कंटिन्यूटी का मतलब है, बल्कि इक्विवेलेंट है। और क्लोज ग्राफ का मतलब ये है। अब यहाँ पे फर्क क्लियर है कि यहाँ पे पहले t of xn must converge to, यहाँ पे that's a given ना। तो क्लोज मतलब you could have a map where xn converges to x but t of xn does not converge at all, है ना। तो यहाँ पे हमें पहले वो assumption चाहिए, मतलब that's assumed कि अगर xn converge, t of xn converge करेगा, यहाँ पे वो ऑलरेडी है, t of xn converge करेगा। यहाँ पे this is conclusion, this is in the assumption that t of xn must converge in the premise of the theorem। तो अगर वो converge करेगा तो y को ही converge करेगा, यहाँ पर वो तो y को ही converge करेगा। तो मैं फर्क आ रहा है समझ? यहाँ पे हाँ अगर सर। converge करेगा तो y को ही converge करेगा, यहाँ पे क्या है, y को मतलब tx को ही converge करेगा in any case। यानी यहाँ पे वो कन्वर्ज नहीं भी कर सकता, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर t of xn कन्वर्ज करेगा तो tx को ही कन्वर्ज करेगा, दैट्स क्लोज ग्राफ। एंड
कंटिन्यूटी इज अगर एक्स एन एक्स को कन्वर्ज करेगा तो टी ऑफ एक्स एन कन्वर्ज करेगा ही और टी एक्स को ही कन्वर्ज करेगा। तो वो जरा फर्क मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। तो टी इज लीनियर एंड टी हैज अ क्लोज्ड ग्राफ, क्लोज्ड ग्राफ। व्हाई? वही, if xn converges to x and t of xn converges to some y, right? So let's see what would be the limit. So अगर xn converge करेगा x को, so what does that mean? That means norm of xn minus x infinity goes to 0 and norm of t of xn minus y, ये भी c0 0 में है, मतलब ये y में है और वो x में है और दोनों है हमारे वो c0 0 सेम स्पेस। लेट इट बी y, लेट इट बी x, ठीक है। ओके, इंफिनिटी गोज टू राइट 0। आई शुड राइट इट लाइक दैट। चलो मैं इसको थोड़ा डिटेल में करूंगा जस्ट टू मेक इट, क्या बोलते हैं ना, वाटर टाइट। देखिए दोनों का फर्क थोड़ा सटल है, मतलब इट्स नॉट दैट, उतना फर्क नहीं है, लग रहा है उतना फर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी अल्टीमेटली वही आ रहा है। So it means that for any epsilon positive, मैं ऐसे करूँगा, there exists some, let me call it n not belonging to a set of natural numbers, और इसके लिए कोई दूसरा हो सकता है। चलो अब ज्यादा ही डिटेल में करते हैं। Comma n1 belonging to the set of natural numbers such that norm xn minus x जो है infinity is less than epsilon and norm of for all n greater than equal to n naught and t of xn minus y infinity is less than epsilon for all n greater than equal to this small n. Now that's the definition of convergence. तो इसका मतलब हुआ सुप्रीमम। So let me write xn का मतलब है इसकी जो सीक्वेंस है वो जैसे हम करते हैं, हम लेते हैं xnj, आई थिंक वो ना n का इंडेक्स ऊपर रखते हैं, कोऑर्डिनेट्स का नीचे, तो राइट। सो लेट्स, अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम, वैसे ऐसे ही लिखते थे हमने सीक्वेंसेस को ना, सीक्वेंस इट्स अ सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस। सो अगर तुम्हें कैसे लिखूं, चलो ऐसे ही लिखते हैं बिकॉज हमने पहले ऐसे ही लिखा है, और जब मैंने सीक्वेंसेस ऑफ सीक्वेंसेस की बात की है तो सीक्वेंस का इंडेक्स मैंने ऊपर लिया है और कोऑर्डिनेट्स का नीचे, ठीक है ना। तो वही मैं यहाँ पे करूंगा। तो सीक्वेंस का इंडेक्स यहाँ पे होगा, इट मींस सुप्रीमम एक्स एन जे माइनस एक्स जे, ठीक है, is less than epsilon for all n greater than equal to n naught and supremum of course j greater than equal to 1. It means that ठीक है supremum t of, ऐसे करूंगा मैं, t of xjn minus some yj infinity, मैं क्या लिख रहा हूँ, supremum is less than epsilon for all n greater than equal to n naught and 1. So which would imply xn minus j, xj is less than epsilon for all n greater than equal to n naught and t of, इससे पहले भी हम ऐसा कुछ कर चुके हैं तो तुम उसको देख लो, is less than epsilon for all n greater than equal to n1. What does that mean? So these are the coordinates, coordinate functions for all j greater than equal to 1, which means that x and j converges to xj
for all j greater than equal to 1, and T of xjn converges to yj for all j greater than equal to 1, which implies that xnj converges to xj for all j greater than equal to 1, but T of xnj hoga, it would be, what would be it? I can write it as actually 1 by xnj. I think it should be j times xnj converges to yj for all j greater than equal to 1. But if x and j converges to xj, it would imply that j times x and j converges to j times xj. है ना? So therefore yj must be equal to jxj for all j greater than equal to 1, which means that y must be equal to p of x. थोड़ा सा आर्गुमेंट कॉन्वोल्यूटेड है, लेकिन जितना इसको आसान किया जा कर सकते थे उतना कर सकते. तो इसका मतलब therefore p has a closed graph. p has a closed graph. यानी मैंने माना अगर xn, तुम्हारी बात समझ में आ रही है, and t of xn converges to some y, then y is equal to t of x, but t is not continuous. But t is not continuous. Now that's easy to see. ये क्या हो रहा है यहाँ ठक 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 कुछ? Because for en equal to 0 0 up to 0 1 0 so on and so forth, 1 is at the nth place. This belongs to 0 0, of course only one non-zero term with इसका जो sup norm है, it is exactly equal to 1 for all n greater than equal to 1. But what is t of en? t of en होगा 0 0 0, ये जिस पोजीशन पे है उसी से इसको मल्टीप्लाई होगा, and it would be n 0 0 0. So norm of tn जो होगा, sup norm, वो होगा n. Now this would go to infinity as n approaches infinity. लेकिन वो तो वायलेशन होगी, क्योंकि अगर t कंटिन्यूअस होता है ना, if t was continuous then क्या होता, तो ये बाउंडेड होता. क्यों? क्योंकि अगर t कंटिन्यूअस होता then t of en जो होगा वो होगा लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ t into norm of en, लेकिन वो तो 1 है. So this would have been less than equal to norm of t for all n. लेकिन यानी it would have been bounded, लेकिन यहाँ पर तो वो bounded नहीं आ रहा है. ये होगा ना n into 1, जिस जगह पे है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं ना अंडर और मैप. So it is not continuous although t has a closed graph. Similarly, अगर मैं इसी मैप को लूं, अगर मैं t को इसका उल्टा कर दूं, t from x to y अगर मैं डिफाइन करूं, मगर b अगर मैं लूं ना, क्लोज ग्राफ भी होल्ड नहीं करेगा for these spaces. So अगर मैं लूं t of x equal to x1 x2 by 2 x3 by 3, इसका उल्टा, right, where of course x1 x2 so on and so forth belongs to x, then t is linear वगैरह वगैरह. t is a linear map जो तुम चेक कर सकते हो, and norm of tx जो होगा infinity में वो होगा, this would be continuous because this would be less than or equal to, देखो ये क्या होगा, this would be supremum over j greater than equal to 1 modulus of, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, norm of, लिख देते हैं पूरा पहले, x1 x2 by 2 x3 by 3 so on and so forth, infinity norm, this is equal to supremum j greater than equal to 1
jxj. Now which is less than or xj by j, sorry, यहाँ है ना उल्टा, so it will be xj by j, which clearly is less than equal to supremum j greater than equal to 1 xj, which is equal to norm x infinity, that is norm of tx is less than equal to, which implies that t is continuous and it's bijection. So it's a continuous bijection. But as we know, T inverse is not open and hence surjection. तो bijection है तो surjection है ही. तो अगर कोई Banach spaces के दरमियान एक continuous bijection है, तो according to open mapping theorem, it should have been an open map. So T is not an open map because T inverse is not continuous. क्योंकि अगर open होता, T inverse मतलब जो हम देख ही चुके हैं, T inverse जो पहले हमने किया था ना, T define, वो इसका continuous है. ऐसे हम define करेंगे. So hence इसका मतलब ये हुआ, I have a continuous linear bijection which is not an open map. So therefore, open mapping theorem does not hold for x equal to y equal to c0 0. इसीलिए इसका मतलब है कि अगर स्पेस कंप्लीट नहीं है तो ओपन मैपिंग थ्योरम या क्लोज मैपिंग थ्योरम ट्रू हो ये जरूरी नहीं है. Now I can do another example. Second, एक और एग्जांपल करते हैं. Let's take x equal to c1. Should I take 0 1? I think I should take 0 1. चलो 0 1 पे लें कि ab पे लें. ab पे थोड़ा सा है गड़बड़. चलो 0 1 पे लेते हैं, doesn't matter. एंड y को लेंगे हम c01. अब ये मैंने बताया नहीं व्हाट इज दिस स्पेस, ये तो तुम्हें पता ही है. दिस इज ऑल स्केलर वैल्यूड फंक्शंस फ्रॉम 0 1 टू द फील्ड k जिस पे ये वेक्टर स्पेस है, such that f is continuous. तो ये है all functions from 0 1 to the scalar field k such that the derivative of f is continuous. यानी पहले वो exist करना चाहिए और उसका derivative continuous. Clearly, sum of two differentiable functions is here differentiable. Scalar multiple of a differentiable function is differentiable. So x is a vector space. ठीक है ना? So, but if a function is differentiable और उसका derivative भी continuous है, तो पहले उसको continuous होना जरूरी है. So I can say x is a subspace of y, a proper subspace, क्योंकि सारी की सारी continuous functions differentiable नहीं है. और इसका मतलब x is a proper subspace of, नहीं, मैंने इसको y लिया, so y, and we know that y is complete. Now y is a Banach space, ये हम कर चुके हैं. Y is a Banach space. But x is not a Banach space. x is, x जो मेरा था differentiable functions जो हैं, मतलब continuously differentiable functions, इसको हम ऐसे c1 यहाँ कर देते हैं, is not a Banach space. Why? Because it's a proper subspace. अब देखो, let me write it like this. Now, by Weierstrass approximation theorem, Weierstrass approximation theorem क्या कहता है? किसी को याद है? Yes or no बता दो ना. हाँ? अरे बताओ, कोई बात नहीं, नो है तो मैं आगे बढ़ूंगा ना, हमारा टाइम थोड़ा कम है. Weierstrass approximation theorem कहता है कि if you take any continuous function, say a function continuous on some domain, on some interval p, then there exists a sequence of polynomials
contained in polynomials defined on AB, ठीक है, such that अगर f is continuous, such that Pn converges to f uniformly on AB. इसका मतलब ये हुआ कि Pn minus f जो है सुप नॉर्म में, क्योंकि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करते हैं, goes to 0 as n approaches infinity, which would imply that if I take the P, the all polynomials defined on AB is dense in CAB. मैं ये बताना चाहता हूँ, why would C1 be? So now look at this. I've got P, AB जो है, उसका जो क्लोजर है वो CAB है. No, that's Weierstrass approximation theorem. P, I mean all polynomials defined on AB. Now clearly C1AB जो है, clearly मैं ऐसे लिख सकता हूँ, polynomials are continuously differentiable. They are also contained inside C1AB. Do you agree with me? है ना? हाँ सर, हाँ सर, Because polynomials are continuously differentiable. तो इसका मतलब PAB जो है, that would be closure जो होगा वो contain होगा C1AB का closure में. ठीक है ना? Because if a subset A is contained in subset B, then closure of A is contained in closure of B. Right? Right, है ना? Okay. हाँ सर. So once I have done that, उसका मतलब ये हुआ PAB is contained in C1AB, but so that means that I would get this thing, CAB is contained in C1AB, है ना? मिलेगा ना ये इसके क्लोजर में, क्योंकि ये इसके बराबर होता है by Weierstrass approximation theorem, right? So that would imply that CAB, so अगर मान लो ये बानाक स्पेस है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर ये बानाक स्पेस होती तो गड़बड़ हो जाती. कैसे मैं बताता. Now that would imply if C1AB was a Banach space, it would have implied that C1AB was closed in CAB, क्योंकि ये इसकी सबस्पेस तो है. क्लोज्ड का मतलब ये हुआ कि C1AB का जो क्लोजर है वो हमें मिलेगा इक्वल टू C1AB अगर ये क्लोज्ड होता, अगर ये बानाक स्पेस होती. लेकिन अगर ये इसके बराबर होगी तो हमें क्या मिलेगा, CAB is contained in C1AB, है ना? इससे ये मिलेगा ना, क्योंकि ये दोनों बराबर है. अगर ये बानाक स्पेस होती तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, which is not true, which is not, इसका मतलब ये बानाक स्पेस नहीं हो सकती. ये बात समझ में आ रही? सो ये बानाक स्पेस नहीं, तो इट्स नॉट अ बानाक स्पेस, क्योंकि अगर ये बानाक स्पेस होगी तो गड़बड़ हो जाएगी बिकॉज ऑफ दीज वाइस्ट्रास अप्रोक्सिमेशंस. सो ओके, हाँ वैसे हम ये भी कर सकते थे, इट डजंट मैटर. चलो इससे भी क्लियर हो गया. ओके, अब डिफाइन में मैप करूंगा. अब देखो ध्यान, डिफाइन में करूंगा t फ्रॉम x, ये मैंने क्या लिखा, x प्राइम, ये x प्राइम नहीं है, x है ना, ऊपर c के ऊपर 1 है, c के ऊपर 1 है, प्राइम नहीं है, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन. तो मैं ले रहा हूँ x to y मैप. So these are continuously differentiable functions and these are continuous functions on the same interval.
So once that is clear, now define T of f to be f prime. देखो यहाँ पर अगर कोई फंक्शन है x में, है ना, तो उसका डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करता है और उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है. सो इफ f बिलोंग्स टू, मेरे कहने का मतलब है C101, बाय डेफिनेशन f प्राइम बिलोंग्स टू C01, क्योंकि ये वो वाली फंक्शंस हैं जिनका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस. सो देन t इज लीनियर, ये तो तुम्हें पता ही है ना. t इज अ लीनियर मैप, क्योंकि अगर तुम दो फंक्शंस को लोगे तो वो क्या होगा, f प्लस जी होल डेरिवेटिव, और हमें पता है डेरिवेटिव अप्लाइज लीनियरली. तो इसी तरह से t ऑफ अल्फा f होगा, अल्फा f का डेरिवेटिव वो तुम्हें पता है, इट्स अल्फा इनटू f डेरिवेटिव. सो t इज लीनियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड. And suppose that, and we show that, and t has a closed graph. लिख देते हैं, t has a closed graph. Why? तो मैं ऐसे करता हूँ. Why? Because if xn converges to x in x, and I should not, मुझे fn लिखना चाहिए, ठीक है. If fn converges to f in x and t of fn converges to some y belonging to y, it implies that y is equal to t of x. मैं ऐसे लिखता हूँ, fn converges to f. नहीं, कैसे, अभी हम नहीं कह सकते, हमें प्रूव करना है कि ये क्लोज ग्राफ है, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं. सो t of fn का मतलब हुआ fn derivatives converge to some y function belonging to y. Now since, so which implies that fn, चलो मैं ऐसे करता हूँ, converges to 0 as n approaches infinity. यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव है, that minus y converges to infinity, converges to 0 as n approaches infinity, which implies that fn actually converges to f uniformly on 0, 1, and fn prime converges to y uniformly on 0, 1. देन जो हमने किया था, पता नहीं तुमने मुझसे पढ़ा क्यों, वो जो प्रॉपर नया रियल एनालिसिस है, now it would imply that y is equal to f dash. तो जब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होती है, then y would be equal to the derivative of this function, derivative of the limit function. तो ये मैं तुम्हें चाहूंगा तुम रिवाइज करना, जो हमने रियल एनालिसिस में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पढ़ा है. Okay, which implies that therefore y is equal to t of f, which implies that t has a closed graph. But t is not continuous, वो हम आराम से कर सकते हैं. But t is not continuous. Why? Let's take a sequence. Let's take a number. Now define xn, yes, in fn लेता हूँ, fn at t to be to t raised to power n. T belongs to 0, 1. So what? अगर मैंने ऐसे लिया एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, मेरे कहने का मतलब है f1 of t मैंने ली एक डिफरेंशिएबल फंक्शन, दैट इज t, फिर मैंने f2 of t लिया, ये सभी की सभी डिफरेंशिएबल फंक्शंस. तो मैंने ली ये फंक्शंस, देन ऑफ कोर्स ये सारी की सारी डिफरेंशिएबल है, उनका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, they belong to, they're contained inside x, which are continuously differentiable functions, and norm of xn, norm of fn would be equal to supremum over t belonging to 0, 1, fn of t, that would be supremum over t belonging to 0, 1,
what I have t raised to power n, है ना? Now that would be just 1. इसका maximum value तो 1 ही होगा. If t belongs to this interval 0, 1, of course sup norm की हम बात कर रहे हैं. And what would be norm of t of fn? So norm of t of n would be supremum इसका derivative. T belongs to 0, 1, fn dash t, that would be supremum over t belongs to 0, 1. इसका derivative होगा n times t raised power n minus 1, and you will see that that's equal to n, right? So I have norm of t of n, sup norm would go is equal to n, would go to infinity as n approaches infinity, although norm of fn infinity is equal to 1 for all. So it implies that t is not a bounded linear operator, it's not continuous. In a closed graph है, continuous नहीं है. और हमने ली थी, हमने इसका जो रेंज लिया था, नहीं, हमने इसका जो डोमेन लिया था वो कंप्लीट नहीं था. यानी अगर यार डोमेन या रेंज या दोनों अगर इनमें से कोई कंप्लीट नहीं है, तो क्लोज ग्राफ थ्योरम या ओपन मैपिंग थ्योरम डज नॉट होल्ड. होम असाइनमेंट यू फाइंड सम अदर एग्जांपल. थोड़ा सा तुम इसके लिए पढ़ोगे होम असाइनमेंट, फाइंड सम अदर एग्जांपल जहां पे ऐसा होता है. ठीक है कि क्लोज ग्राफ है पर कंप्लीट नहीं है, या क्लोज या फिर ओपन मैपिंग का कंक्लूजन होल्ड नहीं करता. ओके, सो लेट मी एंड इट हियर. इसको खत्म करते हैं यहाँ पे. आज कितने स्टूडेंट्स? 27. दैट्स गुड. हाँ सर. एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर. ठीक है सर.